Hello dear student, I am Varun Kumar Nishad from LPM school. In this video we are going to discuss about the colloidal solution or colloidal mixture. Colloidal mixture or colloid. Colloidal mixture or colloid. First of all, what is a colloid? A heterogeneous mixture or heterogeneous mixture which solute particles size intermediate between 10 raised to power minus 9 meter to 10 raised to power minus 6 meter is called colloidal solution. For example, that is milk, blood, toothpaste, etc. So a heterogeneous mixture which solute particle size is intermediate between 10 raised to power minus 9 meter to 10 raised to power minus 6 meter is called colloidal solution. For example, milk, blood, toothpaste, etc. Now we are talking about the characteristics of property. So there is a special term for solute and solvent. तो सॉल्यूट का जो स्पेशल टर्म होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्शन फेज. So in this way, now again defined as which a heterogeneous solution in which the dispersed phase are dispersed in a dispersion medium. I repeat again, a dispersed phase is dispersed in dispersion medium. In a dispersion medium is called colloid, and it commonly called as sol. So it is a heterogeneous mixture. मैं इसको इस तरह से और लिख सकता हूँ. A heterogeneous mixture which dispersed phase. A heterogeneous mixture which dispersed phase
इज डिस्पोज्ड, स्प्रेड होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं इन डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड कोलाइड, कोलाइड and it commonly called as sol. For example, suppose sol, colloids are commonly called sol. कोई sol है, suppose आपने जो आपका डिस्पर्सन फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, वो आपका क्या है, सॉलिड है. एंड डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम, और वो वाटर है. सो सॉल के हिसाब से क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल. सपोज आपका डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, और डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्सन मीडियम आपका जो है वो है आपका बेंजीन. बेंजीन एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, तो बेंजीन है, तो बेंजीन तो आपका सॉल के हिसाब से आपका कोलाइड क्या हो जाएगा, बेंजोसॉल, बेंजोसॉल. आपका जो सोल्यूशन होगा, आपका जो नॉन एक्वस कोलाइडल सोल्यूशन होगा वो होगा बेंजोसॉल. इन दिस वे वी कैन कैटेगराइज दैट अनदर कैटेगरी ऑफ दिस सॉल. सपोज now we are going. So now dear student, here is some examples of some sols. Like dispersed phase are different, dispersion medium are different, common name and examples. Suppose dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas, so it will be called aerosol, that is spray, cloud, mist, and it will be repeated. So spray, cloud and mist etc. तो ये जो स्प्रे, क्लाउड और मिस्ट होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, एरोसॉल के. यानी कि जो कोलाइडल मिक्सचर होता है, तो वो उसका जो डिस्पर्सन मीडियम होगा उसमें सॉलिड स्प्रेडेड होगा. जैसे धुंध जब देखते हैं आप, बिल्कुल चारों तरफ धुंध हो जाता है, या फिर स्प्रे होता है, तो स्प्रे में गैस में क्या होता है, गैस में क्या डिजॉल्व होता है, लिक्विड डिजॉल्व होता है. सोचिए, गैस में लिक्विड डिजॉल्व होता है, उसका जो सस्पेंसर, उसका जो कोलाइड होता है, वो जो होता है वो स्प्रे होता है, और क्लाउड होता है, और मिस्ट होता है. मिस्ट में धुंध होता है. सॉलिड, तो सॉलिड एक डिस्पर्सन फेज है. ये तो बिल्कुल सिंपल है, कॉमन है. सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स होता है. सॉलिड जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स होता है, उसको बोलते हैं हम सॉल, कॉमन नेम. तो उसका एग्जांपल क्या होगा, पेंट्स, जो पेंट जो होते हैं, एशियन पेंट एंड इंक, मड, ये सब एग्जांपल है. इसमें सॉलिड जो होता है डिस्पर्स होता है लिक्विड में, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ पेंट्स, इंक एंड मड. लिक्विड में है दैट इज कॉल्ड इमल्सन दैट इज मिल्क, फिश, क्रीम. ये दोनों जो एग्जांपल है वो लिक्विड जो डिस्पर्स्ड फेज है, और डिस्पर्स्ड दोनों जो फेज है, दोनों जो स्टेट ऑफ मैटर है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का, दोनों का जो स्टेट है वो लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड इमल्सन. इमल्सन भी एक तरह का कोलाइडल मिक्सचर होता है, दैट इज मिल्क, फिश, क्रीम. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम कॉमन कोलाइड्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द characteristic property of colloids. The character or property of colloidal solution. First, filterability. So colloidal particles are too small. Particles are smaller than
than pore size of filter paper. Filter paper. So that's why they easily pass through them. They easily pass through them through filter paper. Filter paper. So now another, the heterogeneity. Definitely heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Visibility. There is no visibility of colloidal particles. Particles. It can be seen under powerful microscope. It can be seen under microscope. Now another property, that is diffusibility. रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन rate. No, diffusion rate is slow of colloidal particles. Diffusion rate is slow of the colloidal particles. Stability. So stability, colloidal particles are settle down slowly, settle down slowly, but rapidly settle down by centrifugation. So first is, the colloidal particles are smaller than pore size of filter paper. So that's why they easily pass through filter paper. Second, the heterogeneous. These are the heterogeneous mixture. Third, there is no visibility of colloidal particles. It can be seen under microscope. Diffusion rate is slow of colloidal particles. Colloidal particles are settled down slowly, but rapidly settle down by centrifugation. Now another remaining property of colloidal, that is Brownian moment. Colloidal particles, are move randomly in all direction. The colloidal particles are moved randomly in all direction
This phenomena is called as Brownian movement, zigzag or Brownian movement or motion, because this Brownian motion is discovered by Robert Brown. Another most important property of the colloidal solution, that is Tyndall effect. Tyndall effect is one of the most important property of colloidal particles. When we pass the torchlight or light through to a colloidal solution, the colloidal particles or colloidal dispersed particles are scatter the beam of light and make the path visible of the light. This phenomena is known as Tyndall effect. Suppose if you observe that if you stand in a dark room and a small hole, and the sunlight enter in your room with a small hole, if you observe concentrately, when the light enter in a room, some particles are move randomly in all possible direction. This are visible in the presence of sunlight or any light which enter in your room. So to make the path visible of the light, this phenomena is known as Tyndall effect, and Tyndall effect is done by the colloidal particles. Now, dear student, the phenomenon of scattering of light by colloidal particles as a result of, इसके बाद क्या होता है, as a result of which path of beam of light, जो लाइट की बीम होती है make visible, वो विजिबल होने लगती है, is called Tyndall effect. It can be observed that in the canopy of forest, अगर फॉरेस्ट आप ऑब्जर्व करते हैं, कोई फॉरेस्ट है और एक रेगुलर अरेंजमेंट में प्लांटेशन है, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे नीचे से, तो सारी की सारी ब्रांचें जो है बिल्कुल मिक्स होती हैं, और उस ब्रांच के ऊपर से जब सनलाइट इंटर करती है, तो जो इंटर करती है, तो जो मिस्ट होती है, मिस्ट की जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर जिगजैग मूव कर रहे होते हैं, तो वो उनका जो मूवमेंट होता है उस बीम ऑफ लाइट में विजिबल होता है, और वो जो विजिबल हो रहा होता है तो वो जो लाइट की जो डायरेक्शन है उसको स्कैटर करने की कोशिश करता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो it is a property of colloidal particles and its definition. So another aspect we will discuss in the next video. Thank you.